Hello guys, welcome to Conceptual Academia. My name is Dutt. Today we're going to be starting the first chapter of biology, class 9th ICSE. The name of the chapter is Basics of Biology. In this chapter, we'll be studying the details of biological sciences and the very basics of it. This chapter is very important from class 9 point of view and it gets repeated in class 11th and 12th as well. Also, certain portions of this chapter are relevant and important for comparative exams such as NEET. So students, let's begin with the chapter. The name of the chapter is Basics of Biology. So there are several components in this chapter within which we will try to find the answer of what exactly life is. We often come across the word life, but we do not know the meaning of it from the perspective of biological sciences. There is two perspectives to understand this word. One is the philosophical point of view, and the other one is the scientific point of view. So, from the scientific biological perspective, we'll try to understand what life actually is. The second part of the chapter speaks about cell biology, where we'll discuss the cell and its cellular processes and the organelles which are involved in making up of a cell. So let's start the chapter from the first topic, that what is life. This is also very essential for you to understand and build a foundation for various comparative exams and your class 9th exams. Okay, so what is life? We cannot define in sciences what life actually is, but we can understand life via the various processes that we can observe or via the observable characteristic features. So there are certain characteristic features of life through which we can understand whether an organism is living or not. So there are two types of things that we can come across. One is biotic, which is the living component, and abiotic, which is the non-living component. Coming to the biotic component or the living, we'll have to understand the characteristic features of life. So there are certain characteristic features which we will deal one after another in detail. So to understand the characteristic features of living or biotic agents, we'll have to understand the characteristics of life. There are certain characteristics. If those are present, we can say for certainty that a particular organism is living. And there are certain other characteristics of life which are also sometimes shown by abiotic components or the non-living objects. Now coming to the characteristics of life, or we might say the characteristics of living. The first and the foremost is growth. Can we say for certainty if we observe growth in something that it is living? क्या हम लोग बोल सकते हैं अगर किसी में हम लोगों ने ग्रोथ ऑब्जर्व किया तो क्या हम लोग बोल सकते हैं whether it is living or not? So growth can be of two types. Growth can be either external growth or internal growth. So growth are of two types, external and internal. External growth मतलब जो ग्रोथ बाहर से हो रहा है, इंटरनल ग्रोथ जो ग्रोथ अंदर से इनिशिएट हो रहा है. एक्सटर्नल ग्रोथ को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? सपोज देयर इज अ माउंटेन एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ मास एंड द माउंटेन grows a little taller. So can we say that the mountain is living? No, we cannot. Why? This growth is external. This type of growth is known as accretion, that takes place via deposition of masses. Whereas in living systems, the characteristic feature is internal growth or intussusception, where a living organism
will grow from inside. Now, this will be counted as a characteristic of life, whereas this will not. If we say that is growth a defining feature of life, we cannot say that growth is a defining feature or not. But yes, internal growth or intussusception is a defining feature of life, whereas external growth or accretion is not. Understandable? Coming to the next characteristic of life, this was first. The second one is reproduction. What is reproduction? It is the biological process where a living organism will give rise to a similar offspring of its for the survival of the race and continuation. So it is a biological process where an organism will give rise to an offspring similar to itself for continuation of its race. If a certain species goes on and decides कि आज के बाद से we won't reproduce, so we will not be able to see the next race or the next generation or the filial generation of that very particular species. So reproduction is a biological process जिसमें एक particular organism अपने तरह के एक offspring को generate करता है. This can be of various types, which we are going to be studying in the next slide. But before that, reproduction is also not a defining feature of life. मतलब जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको देख के हम लोग ये नहीं कह सकते कि जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है वही लिविंग है और जिसमें नहीं हो रहा है वो नॉन लिविंग है. ऐसा हम लोग क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस. What are those exceptions? There are certain human beings, like sterile human beings. Sterile humans यानी कि जिनके बच्चे नहीं होते हैं, even after trying, तो ये living है. These humans are living, but they cannot have kids or offsprings despite trying. So these organisms are living, but reproduction is not working for them. So we can say for certainty that reproduction is not actually a defining feature or a characteristic feature of life. Or the other examples can be hybrid organisms. Hybrid organisms such as hinny or mule, which is a cross between a horse and a donkey. Since these species are a cross between two genetically dissimilar species, they cannot reproduce any further. These are living organisms, but they cannot reproduce. So we can say that reproduction is not actually a defining or characteristic feature of life. Now, coming to the different types of reproduction. What are the types of reproduction? The major two types of reproduction, जो कि दो major types के reproduction है, वो है asexual reproduction and sexual reproduction. I hope आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है, but let me summarize this to you real quick. हम लोग इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. Everything is to the point and everything is relevant from the examination point of view. So asexual reproduction. In this particular type of reproduction, only one organism is required. And in case of sexual reproduction, two organisms are required. Asexual reproduction में कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है. गैमेट यानी कि जैसे ह्यूमंस में मेल में स्पर्म होता है और फीमेल्स में एग या फिर ओवम होता है, वैसे ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. तो गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेसिस इज द बायोलॉजिकल टर्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनीथिंग. सो देयर इज नो गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस इसमें नहीं होता है. और अगर गैमेटोजेनेसिस नहीं हुआ तो फिर गैमेट के फ्यूजन का सवाल ही नहीं बनता. लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज गैमेटोजेनेसिस and fusion of gametes, which is known as fertilization.
हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म से उसका यंग वन डेवलप हो रहा है, तो फिर उस ऑर्गेनिज्म का एग्जैक्ट रेप्लिका उसका ऑर्गेनिज्म उसका ऑफस्प्रिंग होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्लोन कहते हैं. क्लोन इज अ बायोलॉजिकल वर्ड which means that this organism, the newly formed filial generation organism, is exact copy of its parental generation. मतलब ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होगा और जेनेटिकली भी सिमिलर होगा, एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगा उसके पेरेंट्स के साथ. लेकिन क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में द गैमेट्स आर कमिंग फ्रॉम टू ऑर्गेनिजम्स एंड इट इज गेटिंग फ्यूज्ड. फर्टिलाइजेशन इज द टर्म फॉर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स. क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के ट्रेट्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आएंगे जो कि रिकम्बाइन होंगे और इसकी वजह से जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे. टू सर्टेन एक्सटेंट एग्जैक्ट रेप्लिका या फिर क्लोन जनरेट नहीं होंगे. Now, what are the different types of asexual reproduction? Asexual reproduction में हो सकता है binary fission, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है, say for example an amoeba. ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है और ये उसका स्यूडोपोडिया है जो कि इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है. लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो ऑर्गन की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज इट्स लोकोमोटरी ऑर्गन. नाउ इन द केस ऑफ अमीबा इट इज स्यूडोपोडिया. स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट. देयरफॉर स्यूडोपोडिया इज आल्सो नोन एज फॉल्स फीट. अच्छा, तो ये अमीबा क्या होता है? इसमें पहले इसका जो न्यूक्लियर कंटेंट और जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है दैट गेट्स enlarged, दैट बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है बिफोर द सेल डिवाइड्स एक्चुअली. तो इसमें सेल पहले साइज में बड़ा हो गया, उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियर डिविजन टेक्स प्लेस. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज एंड आफ्टर दैट द न्यूक्लियस गेट्स सेपरेटेड और उसके बाद होता है सेपरेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड टू इंडिविजुअल एंटिटीज आर फॉर्म्ड. Two individual daughter amoebae are formed, which are exact replica genetically and morphologically of their parents. Parent or mother amoeba. So this is one type of asexual reproduction, which is binary fission seen by most bacteria and amoeba. There are various types of binary fission as well, but let's not go there. This is a very simple step. The process where nucleus gets divided is known as karyokinesis, and the process where the cytoplasm itself divides into half and two individual daughter amoeba are formed. This step is known as cytokinesis. या फिर न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को हम लोग कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस. There are certain other types of asexual reproduction as well, but these all are not included in your syllabus. I'll just name them and give examples. लेकिन ये सब पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है. जैसे कि budding, these are included in different chapter but not in the basics of biology. budding हम लोग देखते हैं हाइड्रा में, और हो सकता है फ्रैगमेंटेशन जो कि हम लोग देखते हैं स्पाइरोगायरा में, या फिर रीजनरेशन है जो कि हम लोग देखते हैं प्लेनेरिया में, जो कि एक तरह का फ्लैट वर्म है. एंड एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में दिस कम्स अंडर प्लैटीहेल्मिन्थ्स. इसका अगर मैं आप लोगों को ब्रीफ ओवरव्यू या फिर आइडिया दे दूं तो फिर रीजनरेशन प्लानेरिया में कैसा होता है? सपोज एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, नो मैटर हाउ मच यू कट इट, ईच इंडिविजुअल पार्ट विल फॉर्म अ सेपरेट प्लानेरिया. ये सारे पार्ट एक एक अलग अलग प्लानेरिया बना लेंगे. दिस इज नोन एज ट्रू रीजनरेशन. बाय द वे, there are different types of regeneration such as constitutive regeneration, comparative regeneration and true regeneration और complete regeneration. फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है स्पाइरोगायरा में? इसके कोई भी फ्रैगमेंट्स अगर
टूट जाए तो फिर this can give rise to a complete independent organisms. By the way, all of the offsprings which are formed as a result of asexual reproduction will be formed as clones and will be genetically and morphologically copies of their parent organisms from which they have been developed. बडिंग में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है हाइड्रा, इसके पास टेंटिकल्स होते हैं, एक बड फॉर्म होता है और ये बड बाद में बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद when it is enough mature it gets detached from the parent organism and forms a separate organism. This is the mother hydra and this is the daughter hydra. Okay, this was all about asexual reproduction as we will cover in this chapter. Coming to the next slide, sexual reproduction ये humans में कैसे होता है. Sexual reproduction में एक मेल ऑर्गेनिज्म होता है, मेल को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होता है. The male will form its gamete through the process of gametogenesis. Gametogenesis is the common term where an organism will prepare its gamete. तो मेल के लिए प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के लिए प्रोसेस होता है oogenesis. As a result of this gametogenesis, this collective term is known as gametogenesis. Sperm or antherozoid will be formed by the male organism and egg or ovum will be formed by the female organism. We know that we are diploid organisms or we carry two sets of identical chromosomes in us. So we are diploid. तो फिर हम लोगों में कौन सा डिविजन होगा, सेल डिविजन होगा ताकि हम लोग हैप्लॉइड गैमेट्स बना सके या फिर वन सेट वाले क्रोमोसोम्स के गैमेट बना सके. तो हम लोगों में ये डिविजन होगा मियोसिस, जिसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिविजन. मियोसिस होने के बाद ये 2n से n हो जाएगा, फिर बाद में these two gametes will fertilize or fuse to form the zygote which will go on to form the embryo, then the fetus and the offspring then will be delivered and this will be the new offspring. So mota mota this is the process of sexual reproduction and the events and the sequence of events what happens. तो fertilization से पहले जो भी होता है इसको हम लोग कहते हैं pre-fertilational events और fertilization के बाद जो भी होता है इसको हम लोग कहते हैं post-fertilational events. Okay, coming to the next characteristic feature of life. तो हम लोगों ने 3 पढ़ लिया. चौथा characteristic feature of life होता है consciousness. Consciousness मतलब बाहर से जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिम्युलाई आए उसको रेस्पॉन्ड करने की जो कैपेबिलिटी होती है इन ऑर्गेनिजम्स दैट इज नोन एज कॉन्शियसनेस. तो द कैपेसिटी ऑफ लिविंग टू रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिम्युलाई. These can be either reflex action or any type of action that shows our consciousness against the external stimuli या फिर कोई भी disturbance. अगर हम लोगों के हाथ में कुछ गर्म लगा तो फिर हम लोग हाथ हटा लेंगे, ठंडा लगा हाथ हटा लेंगे, गर्म लगा तो फिर हम लोग एसी ऑन करेंगे, फैन ऑन करेंगे, अगर बहुत ज्यादा ठंडा लगा तो फिर हम लोग कंबल ओढ़ लेंगे. This is because we are responding to the changing environment. This is also known as homeostasis or the tendency of a living organism to maintain a constant internal environment जिसमें हम लोग बाहर के एक्सटर्नल स्टिम्युलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं. जैसे कि सनफ्लावर अपने आप को सन के दिशा में मोड़ लेता है, दैट इज आल्सो अ काइंड ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट और नोन एज हीलियोट्रोपिज्म. तो ऐसे विभिन्न रकम के एक्सटर्नल स्टिम्युलाई होते हैं. अनदर गुड एग्जांपल इज मिमोसा प्यूडिका और टच मी नॉट प्लांट. इसको हम लोग हिंदी में छुई मुई प्लांट कहते हैं, जिसको हम लोग जब छू लेते हैं तो फिर इसके लीव्स ड्रूप डाउन कर जाते हैं एज अ रेस्पॉन्स. दिस इज नोन एज थिग्मोनास्टी. Whatever this external stimuli को respond करने का जो consciousness का property है, this is considered as a defining feature of life. मतलब जो भी living है, taking the example of primitive bacteria to most modern complex organisms that is humans, we can say that consciousness is a defining feature. लेकिन इसका भी एक exception है and this is a very important exception, that is coma. जब हम लोग देखते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म कोमा में है, say for a human when he is in coma या फिर प्रोलॉन्ग्ड स्लीप के कंडीशन में है, डीप स्लीप में, तब वो कोई भी एक्सटर्नल स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड नहीं करता. मतलब उसके सामने आप जाके क्रैकर फोड़ दोगे तो फिर भी उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होगा. कभी करना मत ऐसा, लेकिन मतलब दिस इज द सिचुएशन. ही कैन नॉट बी
able to respond to the external stimuli for a longer prolonged period of time. अच्छा, ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। This is the fifth and the last characteristic of life which will be taken into account. The fifth is cellular organization. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या फिर एक से ज्यादा सेल से बना होगा। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म will be made of one or more cell. सेल जो है इसको हम लोग कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? इसीलिए क्योंकि अगर एक घर है, ये जो घर है ये छोटे छोटे ब्रिक्स से बने हैं, वैसे ही हमारा जो बॉडी है वो बहुत सारे सेल्स से बने हुए हैं। इट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स, सो देयरफॉर इट इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग क्यों कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज whatever functions our body can perform, a single cell can also perform. We can respire, a cell can respire. That is known as a cellular respiration. We can excrete, a cell can excrete. Suppose an amoeba, ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर सकता है अपने अंदर खाना लेके फैगोसाइटोसिस के द्वारा या फिर पिनोसाइटोसिस के द्वारा। अगर लिक्विड फूड खा रहा है तो फिर पीना, इससे हम लोग याद रखते हैं पानी पीना, जैसे पिनोसाइटोसिस। अगर सॉलिड फूड ले रहा है तो फैगोसाइटोसिस। दोनों के लिए कलेक्टिव टर्म है एंडोसाइटोसिस, अंदर ले रहा है तो एंडो, और जब वो निकाल रहा है एग्जिट करके उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। वैसे ही हम लोग देख रहे हैं अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सारे फंक्शंस कर सकता है जो कि एक मल्टीसेलुलर कर सकता है। इसीलिए सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। एंड बिकॉज सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ all organism, therefore it is also known as a structural unit of life. Now coming to the different types of cells, cells can either be prokaryotic or eukaryotic. प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बहुत प्रिमिटिव सेल्स या प्राचीन सेल्स। प्रो का मतलब पुराना और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, और यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स बस बैक्टीरिया होते हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल बी कंपेयरिंग दीस टू काइंड्स इन डिटेल। इसका एग्जांपल होता है बैक्टीरिया या फिर आर्किया। यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, बैक्टीरिया के अलावा सारे लाइफ फॉर्म्स, जैसे कि या तो फंगाई, प्लांटी या एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा। These are the different examples of eukaryotic organisms. हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैं कह रहा था दो रकम के हो सकते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स। तो जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक तरह के सेल से बनते हैं, उसको एक ही सेल से बनते हैं, उसको हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो organisms are composed of multiple cells such as humans are known as multicellular or multicellular organisms. Multicellular examples हो जाएंगे humans, plants. Most plants, though there are certain plants which are unicellular in nature, there is a controversy whether those unicellular plants will be counted in protist or in planty kingdom, but that is a story for another day. But these are the examples of major multicellular organisms, whereas the examples of unicellular organisms will include amoeba, bacteria, etc. These are the basic examples of unicellular organisms. The organisms which are composed of single cells, the organisms which are composed of cells multiple, that is more than one. So we'll be concluding the first part of the chapter here. In the second part, we'll be studying the different types of cells such as the prokaryotic and the eukaryotic cells. In eukaryotic cells, we'll be understanding the plant cell and the animal cell, the different organelles which are present in that. And in this video, we have covered
what life actually is and what are the important characteristic features of life and what are the defining features of life. I hope you all will like this video. Please share our video and appreciate our efforts and like the video, comment whatever doubt you have. On our end, we'll try to resolve all the doubts that we can and share our video with your peers and with your friends. So thank you. I hope that you all like this chapter, and I was this was all. So like the video, comment your doubts, and share. Thank you all.